Hi, let's do the choice around the kinked ICs now. So, like I've said before, सारे के सारे जो kinked ICs होते हैं वो perfect complements नहीं होते हैं. So here I'm not doing perfect complements. Perfect complements हम कर चुके हैं. So इस वीडियो में हम perfect complements नहीं कर रहे हैं. हम perfect complements के अलावा जो min functions होते हैं हम उनको cater कर रहे हैं. Alright, so क्योंकि perfect complements are just a part of the minimum functions, but they are not the only kinds of min functions. That is why actually हम लोगों ने Kinked ICs को दो parts में divide कर दिया है. One is the perfect complements and the other are the min functions. 3 parts में divide कर दिया. यहाँ पे मैं max functions भी cover करूँगी. ये हम cover कर चुके हैं. इस वीडियो में हम ये वाले दोनों parts cover कर रहे हैं, which is the min functions apart from perfect complements and all the kinds of max functions. Alright, let's start with the first one. U is equal to minimum of, if you remember मैंने आपको बोला था Kinked ICs की वाली वीडियो के अंदर कि हमारे पास Kinked ICs जो हैं वो एक्चुअली हमारे को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से 4-5 करने की ज़रूरत है. उनमें से हम लोग 4 वेराइटीज़ तो ऑलरेडी कर भी चुके हैं. So I did the 4 varieties earlier in the earlier videos. तो हम उसी को ही इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स से मिनिमम ऑफ x plus y comma 2x. So I actually haven't done this exact function earlier. So that means, this is a new function. So I'm going to take it step by step. ताकि आपके जो steps हैं वो भी revise हो जाए. So what are the steps to find out the min function? First of all, what are the steps to find out the choice? We have to draw a rough sketch. अब रफ स्केच ड्रॉ करने के लिए हमारे को शेप पता होनी चाहिए. शेप पता होने के लिए हमारे को इसका किंक का आईसी बनाना पड़ेगा. व्हाट आर द स्टेप्स टू ड्रॉ द आईसीज? व्हाट आर द स्टेप टू ड्रॉ द आईसी? स्टेप 1 वी फाइंड आउट आवर किंक. Step 1 is we find out our kink. How do we find out our kink? We put x plus y to be equal to 2x. Which is x is equal to y, right? तो इसका मतलब मेरे जो kinks हैं वो कहाँ पे lie कर रहे हैं? My kinks are lying on a 45-degree line. ठीक है? Step 2, put u to be equal to x plus y, which is your perfect substitutes curves. And step 3, put u to be equal to 2x, which are my straight लाइन्स. सो अब हमें ये फिगर आउट करना है कि हमारे कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन और ऐसे है कि वो कैसे है. अगेन फ्रॉम द इंट्यूशन, क्योंकि आप लोग मेरे साथ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स भी कर चुके हो और काफ़ी सारे किंक्ड आईसीज भी कर चुके हो, यू शुड नो दैट माई कर्व इज गोइंग टू बी लाइक दिस. My curve is going to be like this and the rest of the parts are rejected, but let's see which one it's going to be. So I have vertical lines and I have perfect substitutes and I know this is my kink. Let's say take this kink to be 2, 2. Let's take this kink to be 2, 2. So utility function is equal to minimum of x plus y, 2x. When you take a function like 2, 2, my utility comes out to be 4. So if we take further on points here, which is a point like 2, 3. Then what is the utility I'm going to get? Minimum of 2 plus 3, 5, 2 into 2, 4. So utility is still 4, which means this part is part of my IC, which is going to have the kink of 2, 2. है ना? ये पोर्शन उस IC का पार्ट है जहाँ पे 2, 2 lie करता है. Let's take a point somewhere here. This point will be a point like 3, 1. यहाँ पे ना be careful about the point you're choosing. आपको पता है this is u is equal to x plus y, तो आपके वो फंक्शन के अंदर आना चाहिए. मतलब अगर ये 2, 2 है तो u is equal to x plus y के अंदर 2, 2 will lie on the same line as 3, 1. तो आप अगर यहाँ से इस पॉइंट A से पॉइंट B पे जा रहे हो तो पॉइंट B को आपको 3, 1 ही लेना पड़ेगा. आप 3, 1.5 नहीं ले सकते क्योंकि वो इस फंक्शन को डिफीट कर देगा. Do you understand my point? So when you're choosing a point on this line, make sure you choose a point on this line. Now that can get very confusing अगर ये मेरा x plus y की जगह 2x plus y होता है, y plus 2x होता. Then I would recommend कि आप ये वाला point B यहाँ पे लो ही मत. आप ये वाला point लो ना.
ये सिंपल है फिगर आउट करना। x प्लस वाई है, 2 + 2 4 होता है, तो ये भी 4 होगा। You know, the point on the x axis is simpler to figure out ना, this is also 4 and this is also 4, क्यों? क्योंकि x plus y है। तो आप ये वाला पॉइंट लो, बीच वाला पॉइंट लो ही मत, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। So when I have a point like 4, 0, then what do I have? U is equal to minimum of 4 plus 0, which is 4, 2 into 4, which is 8, minimum is still 4, so utility is still 4, which means this part is lying on the same IC and this part is also lying on the same IC. To further reiterate or to further put it in stone is, let's talk about this point. ये वाला मेरा पॉइंट है 0,4। जब मैं इस पॉइंट को इसमें डालती हूँ फंक्शन में, तो मेरे पास क्या आता है? u is equal to minimum of 0 plus 4 is 4 into comma, sorry, 2 into 0, which is 0, so minimum is 0, which means this point cannot lie on my IC, which means that now I am clear कि मेरा IC का shape is this and this, this and this, and so on and so forth. So u is equal to minimum of x plus y comma 2x. We have figured out step number 1, which is draw a rough sketch. हम लोगों ने एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया है। अब सेकेंड स्टेप इज टू फिगर आउट कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। लुक एट इट, यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी बजट लाइन वर्टिकल तो हो ही नहीं सकती। सो एसेंशियली स्पीकिंग, आई कैन हैव 3 possibilities of equilibrium that I can see. 3 possibility of equilibrium that I can see. The equilibrium can be here. The equilibrium can be overlapping this portion, like, you know, overlapping this portion, this wala portion, or if the budget line is really, really fat, then the equilibrium can be here. So first is the equilibrium can be at the kink. Second is the equilibrium can be overlapping the perfect substitute wala part. And the third is that the equilibrium can be on the x axis. अब ये डिपेंड करेगा कि मेरा बजट लाइन क्या है, जो डिफाइन करेगा कि मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ होगा. सो टू ड्राइव द पॉइंट होम, that means for you to understand it really, really well, I'm going to take 3 possibilities of the budget line. So my first budget line is 3x plus y is equal to 300. 2x plus 2y is equal to 300. X plus 3y is equal to 300. And I'm going to make life really simple. The MRS of the perfect substitute wala part is 1 है ना. तो अगर तो मेरा प्राइस रेशियो जो है वो लेस देन 1 है, रिमेंबर ये वाली मैंने जनरल कंडीशन निकाली थी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के अंदर. सो if my price ratio, let me not write like this, if my MRS is less than the price ratio, then I used to consume at the y-axis. Remember, if my MRS was less than the price ratio, I would consume on the y-axis. But यहाँ पे y-axis नहीं है, यहाँ पे क्या है, kink है. So अगर मैं क्या कर रही हूँ, I am trying to say that मेरे पास इस वाले पोर्शन का MRS है, या तो मैं इसके ऊपर कंज्यूम कर रही हूँ या इसके राइट पे कंज्यूम कर रही हूँ या इसके लेफ्ट पे कंज्यूम कर रही हूँ. ऊपर कंज्यूम कब करूँगी, जब मेरा MRS जो है वो प्राइस रेशियो के इक्वल है. अगर मेरा MRS जो है वो प्राइस रेशियो से कम है तो मैं वाई एक्सिस पे कंज्यूम करती थी ना. यहाँ पे तो वाई एक्सिस है ही नहीं, यहाँ पे तो मेरा ये आउटर मोस्ट पॉइंट है, विच मीन्स देन आई विल कंज्यूम एट द किंक. और अगर मेरा MRS जो है वो प्राइस रेशियो से बड़ा है, देन आई कंज्यूम ऑन दी एक्स एक्सिस. So then my life is simple now. I figured out the 3 possibilities. So I am saying if my MRS is less than the price ratio, I used to consume at the y-axis. लेकिन इस डायग्राम के अंदर मेरे पास y-axis तो है ही नहीं, तो मैं इसके y-axis पे नहीं कंज्यूम कर सकती, तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे कंज्यूम करूंगी, तो वो हो जाएगा मेरा किंक पे इक्विलिब्रियम. अगर मेरा MRS जो है वो प्राइस रेशियो के इक्वल है, तो वैसे भी यहाँ पे ओवरलैप पे हूँ ना, बात ही खत्म हो गई. और अगर MRS प्राइस रेशियो से ज़्यादा है तो मैं वैसे भी एक्स एक्सिस पे कंज्यूम करती थी, मैं अभी भी एक्स एक्सिस पे कंज्यूम करूंगी, विच इज गोइंग टू बी माई इक्विलिब्रियम ऑन द एक्स एक्सिस. सो गिवन दैट आई हैव दिस इंफॉर्मेशन, कैन आई नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन.
Yes. So I have minimum of x plus y comma 2x. My first price ratio is 3x plus y is equal to 300. Subject to 3x plus y is equal to 300. Now 3x plus y is equal to 300 is going to be really steep like that. Really steep. क्यों? क्योंकि प्राइस रेशियो जो है वो क्या है 3. MRS is 1. Price ratio is 3 and MRS is 1. So I'm here. MRS is 1, price ratio is 3. I should be consuming at the Kink. I should be consuming at the Kink. Right? I should be consuming at the Kink. So my equilibrium condition is what? My equilibrium condition is that I will be consuming at the Kink. The moment I say that I know that I'll be consuming at the Kink, I know Kink is happening at x is equal to y. When Kink is happening at x equal to y, then I know x is equal to y is equal to 100. That's my answer. Sorry, not 100, 75. 75. X is equal to y is equal to 75. That's the answer. That is the answer. ठीक है, इसमें आप देखो अगर आपके पास यूटिलिटी कितनी आई, मिनिमम ऑफ 75 plus 75 comma 2 into 75 which is 150 comma 150. So my utility here is 150. And if you want to check कि आपने जो किंक निकाला वो सही निकाला कि गलत निकाला, तो आप चेक कर सकते हो. कैसे करोगे? टेक एनी अदर पॉइंट. टेक पॉइंट हियर फॉर एग्जाम्पल. टेक एनी अदर पॉइंट. आप बोलो किंक पे नहीं है जी, हमारा तो ओवरलैप पे होगा. या फिर मेरा एक्स एक्सिस पे होगा. एक्स एक्सिस पे अगर होगा then my x becomes, if my equilibrium was on the x axis then my x becomes 100. So then my point of consumption would have been 100 comma 0, in which case my utility would be minimum of 100 comma 0 which is 100 comma 100 into 2 which is 200. My utility would have been 100. Isn't 100 less than 150? Yes it is, which means ये equilibrium आपका valid नहीं है. इसका मतलब जो किंक वाला इक्विलिब्रियम है वो आपका करेक्ट है. राइट? टेक द सेकंड केस. अच्छा, सेकंड केस मैं बाद में लूंगी. लेट्स स्टार मार्क इट एंड पुट इट ऑन द शेल्फ. लेट्स डू द थर्ड केस. नाउ द सेम थिंग except now it subjects to x plus 3y is equal to 300. So according to our logic, MRS is still 1, but P1 by P2 suddenly becomes 1 by 3. In which case our equilibrium should be on the x-axis. MRS अभी भी 1 है, but P1 by P2 1 by 3 हो गया, तो मेरा equilibrium कहाँ होना चाहिए? x-axis के ऊपर. निकालते हैं. x क्या हो गया? 300. So my utility becomes minimum of 300 plus 0 300 comma 300 into 2 which is 600, but minimum is still 300. Minimum is still 300. That means my this equilibrium is valid. My this equilibrium of 300 comma 0 is valid. Let's check. अगर मैं यहाँ पे ना कंज्यूम करती और मैं किंक पे कंज्यूम करती इस पॉइंट पे, तो मेरे पास क्या होता? Then x would have been equal to y would have been equal to 75. 75 से मेरी यूटिलिटी आती 150. Isn't 300 higher? Yes it is. So this is the equilibrium. तो अगर मेरे पास ये प्राइस रेशियो है तो ये मेरा इक्विलिब्रियम है. अगर मेरे पास ये प्राइस रेशियो है तो ये मेरा इक्विलिब्रियम है. और अगर मेरा प्राइस रेशियो है तीसरे वाला which is 2x plus 2y is equal to 300, then I'm indifferent between this entire line, which means my utility here and my utility here should be absolutely the same because I'm indifferent. मैं चाहे किंक पे कंज्यूम करूँ, चाहे मैं एक्स एक्सिस पे कंज्यूम करूँ, चाहे मैं कहीं पे भी कंज्यूम करूँ इन पूरी लाइन में, I am indifferent. Let's check again. अगर हम किंक पे कंज्यूम करते तो हम कंज्यूम करते where x is equal to y. If x is equal to y, then this is equal to 75, right? Which means my utility is 150. At this point, अगर मैं इस point पे consume करूँगी, then I'm consuming on the x-axis, है ना? In that case, my x is 150 and y is 0. Then utility is minimum of 150 plus 0 is 150. 150 into 2 is 300, which is 150. Utility is still 150. Isn't this utility and this utility same?
It is, which means in this case, the person is indifferent in this entire section. The person is indifferent in this entire section. So then that means ये जो हमने conditions निकाली ना, these are absolutely correct. अगर जो MRS है इस straight line के portion का, it is less than P1 by P2, it's like perfect substitutes, huh? Then I should consume on the leftmost corner, which in our case is the kink. If they are equal, then we are indifferent. If MRS is greater than P1 by P2, then we consume on the x axis. इसी के अंदर अगर मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन बने, in which I have my min function to be this way and this way, like जो हम लोग पहले बनाते थे ना, like this and this and this. In that case, what would be my three possibilities? Either the equilibrium can happen here or here or here. है ना? Let's do one of the cases like that, just for us to understand a little better. All right? हमारे पास और भी cases हो सकते हैं of this and this. In which case, MRS will be this. If MRS is less than, then you consume on the y-axis. If MRS is greater than, then you consume on the kink, and otherwise overlapping. तो ये वाला केस मैं नहीं कर रही हूँ because this is the polar opposite of the one we did before. But ये वाला केस भी कर रहे हैं और हम max function भी कर रहे हैं. So let's do this kind of a case. Let's start with the next question. So next example that I'm taking is u is equal to minimum of 2x plus y, comma 2y plus x. Now, for the first step for this one, without even looking at the price ratios, is to draw a rough sketch. Now, आपको ये वाला rough sketch मैं करा चुकी हूँ पिछले चैप्टर की वीडियो के अंदर, और इसका हम रिविजन भी कर चुके हैं कि इसका कर्व कैसे बनता है. इसीलिए आई एम गोइंग टू जस्ट स्ट्रेट अवे गो ahead and make a curve, and I'll assume you know how to figure out the curve for this one. If you don't, I would say आप प्लीज प्रेफरेंसेस की वीडियोस में जाइए, किंक्ड आईसी करिए ताकि आपको पता लगे. अब ये हमारे पास आईसीज आ गए. अब इसके अंदर क्या है? I have MRS here, I have MRS here, I have an MRS here, I have an MRS here. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? I know that my one MRS is equal to 2, and my other MRS is equal to 1 by 2. So now I will have a price ratio which is less than 1 by 2, case number 1. Second is price ratio equal to 2, 1 by 2, sorry, 1 by 2 की बात कर रहे हैं. Third is the price ratio which is between 1 by 2 and not equal to, because equal to मैं यहाँ पे cover कर चुके हैं, and less than 2. Then third is price ratio, fourth is equal to 2. Fifth is price ratio greater than 2. ये हमारे पास 5 cases हैं. Let's take them one by one. So u is equal to minimum of 2x plus y, comma x plus 2y. ठीक है, इसका मेरा MRS है 2 और इसका मेरा MRS है 1 by 2. Subject to, I'm going to take 5 cases here क्योंकि यहाँ पे 5 cases बनते हैं. I have 3x plus y to be equal to 300. 2x plus y is equal to 300. X plus y is equal to 300. X plus 2y is equal to 300. X plus 3y is equal to 300. Right, and I obviously have my curves to be like this. Like this. So if I ask you, and you know I'm asking you a random question right now, but I want to understand how well you understand. This is MRS and this is also MRS. अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे बताओ MRS यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 by 2 है, या यहाँ पे 1 by 2 है और यहाँ पे 2 है, तो आप क्या करोगे? Do you know the answer to it instinctively? No, I guess not. आना भी नहीं चाहिए. That's a lot of things to be knowing instinctively. आपको कैसे पता लगेगा कि ये 1 by 2 है, 2 है, क्या है? आप इसका कर्व प्लॉट कर लो ना. It hardly take you 2 minutes. So I have 2x plus y. If I was to plot u is equal to 2x plus y, then I know my curves will be like this. Because if I have 50 here, then I'll have 100 here. Then that means that this has an MRS of 2.
क्योंकि ये वाले हमारे क्लोजर टू द एक्स एक्सिस हैं। और अगर सिमिलरली मुझे प्लॉट करना है u टू बी इक्वल टू x प्लस 2y, then my curves will be like this, because then I can have 50 here with 100 here, which means this is MRS is 1 by 2. This MRS is 1 by 2. So do you understand? This MRS is 2 and this MRS is 1 by 2. So clearly अगर मेरे पास कोई भी price ratio है which is between 2 and 1 by 2, which is between 2 and 1 by 2, वहाँ पे तो मैं कहाँ पे consume करूँगी? Kink पे. So if I have a budget line which has a slope which is like here 1, which is between 2 and 1 by 2, or which is between 1 by 2 and 2, I am going to be consuming at the kink, which is what I have written here. मैं ना general condition आपके लिए निकाल रही हूँ, उसके बाद solve करना तो आसान है. Then let's look at the other clear cut cases. Whenever my MRS is less than the price ratio, whenever my MRS is less than the price ratio, then I will be consuming at the y-axis. So whenever my MRS is less than P1 by P2. So my MRS is 2 here, my P1 by P2 is 3 here. So अगर मेरा MRS जो है वो P1 by P2 से कम है, अगर ये वाला मेरा MRS P1 by P2 से कम है तो ये तो कम होगा ही होगा ना. You know, if it's lesser than this, then this is definitely lesser than this, क्योंकि obviously 2 is less than 1 by 2. So if my MRS is less than P1 by P2, which is 3 here, then I'll be consuming on the y-axis, which is this point, or if I extend it, this point right here. If my MRS is 2 and P1 by P2 is also 2, तो इसका मतलब मेरा MRS और price ratio same है, then I'm overlapping this part. Then I'm overlapping the red part. Then I'm in the portion which is overlapping the red part. If my MRS is less than 1 by 2, अगर मेरा MRS जो है, sorry, if my price ratio, so यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर मेरा MRS जो है वो less than प्राइस रेशियो है तो हम कहाँ पे कंज्यूम करेंगे? वाई एक्सिस पे, विच इज व्हाट वी ऑलवेज से. इफ नाउ माय एमआरएस इज ग्रेटर देन द प्राइस रेशियो, मतलब 1 by 2 is greater than 1 by 3 ना. If my MRS is greater than 1 by 2, which is the right hand most one, then I'll be consuming on the x-axis, because that's the right hand most one, which is right here, this point right here. And again, if my MRS is equal to the price ratio here, then I'm going to be consuming overlapping on the green part. You know, so idea बड़ा simple सा है. आपका the only thing you have to do is you have to figure out इसका MRS क्या है और इसका MRS क्या है. वो तो मैंने आपको सिखाई दिया यहाँ पे अपने करा. आपको एक बार पता लग जाए इसका MRS क्या है, इसका MRS क्या है, तो आप अपना प्राइस रेशियो निकाल लो. अगर आपका प्राइस रेशियो ज़्यादा है तो एक्सट्रीम कॉर्नर वाई एक्सिस, प्राइस रेशियो कम है सबसे तो एक्सट्रीम कॉर्नर एक्स एक्सिस. अगर दोनों MRS के बीच में है तो किंक. अगर इक्वल है तो जिसके इक्वल है वो ओवरलैप होगा ना. एक एक करके सॉल्व करें टू सी वेदर वी आर राइट और नॉट. हाँ, लेट्स डू द फर्स्ट वन. u इज इक्वल टू हमेशा मिनिमम ऑफ 2x प्लस वाई कॉमा x प्लस 2y. यू नो, यू सी अ सटल चेंज आई डिड. मैंने 2y प्लस x को x प्लस 2y लिख दिया. क्यों? You know, it's easier to see and figure out. Otherwise our brain sometimes get confused and उसको वो 2 ले लेता है. क्योंकि 2y प्लस x है ना, आप कभी भी y को पहले नहीं लिखोगे, आप हमेशा x की टर्म को पहले लिखोगे. ठीक है. इसका MRS is 2, इसका MRS is 1 by 2. The first case is subject to 3x plus y is equal to 300. According to us, since MRS is less than the price ratio, we will consume on the y-axis. If you are consuming on the y-axis, then y is equal to 300 है and हमारा bundle is 0,300. With a bundle of 0,300, my utility will be minimum of 2x, which is 0, plus y, which is 300, comma 0 plus 2 into 300, which is 600. So my utility is 300. ठीक है? That is my answer according to this condition that we have achieved. Let's take any other case. हम बोलें कि नहीं जी ये तो kink पे होगा. It should be the equilibrium should be on the kink, क्योंकि invert kink है, the equilibrium should be on the kink. Then fair enough. इसका kink is happening at x is equal to y. If I take x to be equal to y, then I'm getting the equilibrium points to be 75, 75,
My equilibrium point is then 75 comma 75. If I put it into the function, I get 75 into 2 is 150 plus 75 is 225 comma 225. In which case my utility is 225. Isn't 225 less than 300? Yes, it is. Which means kink हमारा आंसर नहीं हो सकता है. This is absolutely wrong. Case number 2. Again, u is a minimum of 2x plus y comma x plus 2y subject to now 2x plus y is equal to 300. Now, according to us, this is this red part. So, I can very well consume on the y-axis or on the kink. If I was consuming on the y-axis, then my y would be 300. So, my point of consumption would be 0, 300. 0, 300 से मुझे utility कितनी मिलेगी? 300 की. So, I just took a shortcut. I didn't write it down. I know कि you can solve it yourself और आपको intuitively याद भी हो गया होगा. और अगर वो किंक पे कंज्यूम करता तो वो कंज्यूम करता x is equal to y is equal to 100 पे, in which case again his utility would have been 300. These two are same, which means he is indifferent between these two, which means that our red portion is also correct. तुमने ये चेक कर लिया करेक्ट है, ये चेक कर लिया करेक्ट है. अब किंक पे आते हैं. So in the case number 3 we are saying u is equal to again minimum of x plus 2y comma 2x plus y एक ही बात है, मतलब this is here and this is there, but it's the same thing. Subject to x plus y is equal to 300. In this case, we are saying that kink is the answer, which means that he's going to consume at 150 each. 150 comma 150 is my equilibrium bundle. My utility will be minimum of 150 plus 150 into 2, which is 300, which is 450. My utility is 450. अगर वो कहीं और कंज्यूम करता, फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, तब उसका बंडल क्या होता? हिज बंडल वुड हैव बीन x इज इक्वल टू 300 एंड y इज इक्वल टू 0. सो उसका बंडल होता या तो 300 कामा 0 या फिर उसका बंडल होता 0 कामा 300. 300 कामा 0 में उसकी यूटिलिटी होती 300 प्लस 0 या फिर 600 which is 300. इसमें भी उसकी यूटिलिटी होती 300. But 300 is less than 450, which means our kink is correct. Which means here kink is correct, right? Let's do the next one. U is equal to minimum of x 2x plus y comma x plus 2y. Now subject to x plus 2y is equal to 150. In this case, we had said that he is indifferent here. So he is indifferent between kink and x-axis. Let's see. अगर वो kink पे consume करता तो वो consume करता, sorry, this is equal to 300. X is equal to y is equal to 100 पे, right? In which case his utility would be 300. 2 into 100, 200 plus 100 is 300, 100 plus 2 into 100 is 300. और अगर वो x axis पे consume करेगा तब वो consume करेगा x to be equal to 300 and y to be equal to 0 पे. Then also his utility would be 300. This 300 and 300 is same, which means this is correct. He is indeed indifferent. The last case then, u is equal to minimum of 2x plus y comma x plus 2y. Subject to the last one then, x plus 3y is equal to 300. In this case, we are saying he should be consuming on the x-axis क्योंकि जो हमारा MRS है that is greater than the price ratio. If he is consuming on the x-axis, then where is he consuming? He is consuming at a point like 300 comma 0. When he is consuming at a point like 300 comma 0, his utility is 300, which is the highest possible. Again, you can take multiple points to check. So this is our kinked functions. So I have done these two kinked functions to show you how the equilibrium happens. All right. यही 2-3 cases आते हैं आपको एग्जाम्स के अंदर भी. इसके beyond kinked functions के choices में और ज़्यादा कुछ होता नहीं है और ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है. All right. Let's do a couple of examples of max functions. Max functions. You see, max functions बहुत simple आते हैं, but max functions में ना हमारे पास क्या होगा? Either we'll have this kind of a function, or we will have this kind of a function, or we may have these kind of functions, or any, and so on and so forth. In which case, if you look at it,
if you look at it, if you do any of these cases, हमारे पास max functions के अंदर कहाँ पे होना चाहिए? Where should the equilibrium be? The equilibrium will be always at the kink. In the max functions, the equilibrium is always at the kink. Am I right? No. In the max functions, the equilibrium is on the corner. In the max functions, the equilibrium is on the corner. Why is the equilibrium on the corner? Because let me draw here. Let's say this is my budget line and these are my max functions. Where would I want to consume? अगर मैं kink पे करूँगी तो मैं यहाँ पे रह जाऊँगी. But I want to move to the highest possible IC, na? Which means I can move here. So that is why, should I consume at the kink or the corner? I should consume at the corner. So in a max function, always remember that our corners give us a high result in this kind of a function. What about these kind of functions? In these kind of functions, you solve it the same way जैसे हमने min के kinks किए थे. But ये वाले questions exams में आते नहीं हैं, important भी नहीं है, इसीलिए हम इनको cover नहीं कर रहे हैं. But ये वाले max functions आते हैं, आते भी हैं, टेस्ट भी होते हैं हर जगह पे. एंड यू नीड टू नो कि अगर आप मैक्स फंक्शन कर रहे हो तो उसका इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? हमेशा कॉर्नर पे ही होगा. आई नो दिस वाज अ लेंथी वीडियो एंड अ हेवी वीडियो, बट आई वांट यू टू वॉच दिस वीडियो एटलीस्ट अ कपल ऑफ टाइम्स, ताकि जो भी हमने चीज़ें करी है वो आपके हेड में सेट हो जाए. जो हमने किंक फंक्शंस करे हैं ना, उसकी इंपॉर्टेंस आपको फिर से पता लगेगी जब हम लोग अपने क्वेश्चंस करेंगे स्लत्स्की के, न्यूमेरिकल्स करेंगे स्लत्स्की के या इंटरटेम्पोरल के, क्योंकि उसके अंदर जो हम ओवर टाइम वगैरह की वेरिएशंस लेते हैं उसके अंदर सिमिलर स्टफ आता है विच इज़ अ लिटिल बिट complicated also. So that is why it is important that you get this video right now. दोबारा करो, 3 बारी करना पड़े 3 बारी करो, अपने आप 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करो, हो जाएगा. कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप खुद कर सकते हो. ठीक है. In the next video I will do the application of this chapter which is the taxes, which is the last portion of this chapter. उसके बाद हम असाइनमेंट करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे. ठीक है. Thank you.